अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से अब मेरे कुछ जो इश्यूज़ थे वो सॉर्ट आउट हो गए हैं। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी दुआओं में याद रखा और अपना भरपूर प्यार मुझे भेजते रहे हमारे चैनल और प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूटिव्स और बाकी सब लोगों के ज़रिए। आज जो हम लोग प्रोग्राम लेकर आए हैं क्योंकि आज फ्राइडे है, जुमा है, तो हेल्थ लाउंज हमारा प्रोग्राम रहता है। इस पे हम जो डिस्कस करना चाहते हैं वो एक बहुत ही कमर्शियली सक्सेसफुल और अगर हम लोग मेडिसिन के फील्ड से बात करें तो बहुत ही एक स्ट्रेनस बहुत ही एक मुश्किल तरह से करने वाला काम है प्लास्टिक सर्जरी। जब हम प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं तो ज़हन में सबसे पहले आता है फ़िल्म अदाकार और बड़े-बड़े लोग जिन लोगों ने अपनी बहुत सारी नोज़ जॉब, लिप जॉब, फेशियल चेंजेस करने के लिए जो करते हैं। मगर ये जो एक फ़ील्ड है साइंस के हवाले से बहुत ही सीरियस टाइप का एक फ़ील्ड है। इसमें सर्जरी इन्वॉल्व होती है, इसमें बहुत एक्सटेंसिव लोगों की एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है। और बहुत ही अलग-अलग मरहले से ये गुज़र के जो ये एक प्लास्टिक सर्जरी होती है पेशेंट और डॉक्टर इनका जो कोऑर्डिनेशन होता है बहुत ही सीरियस लेवल का होता है। मैं ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए आज के अपने मेहमान को स्क्रीन पे अपने साथ बुलाना चाहूँगी। जो कश्मीर में पायनियर माने जाते हैं प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के, इन्हीं ने कश्मीर में ये प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस किया था 26 साल इनने अपनी प्रैक्टिस के दिए हैं स्किम्स सोरा में डॉक्टर शबीर इकबाल जो रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर हैं 2007 तक ये प्रैक्टिस कर रहे थे और जीएमसी सुपर स्पेशलिटी में भी इनने एक वार्ड इंट्रोड्यूस किया और आजकल ये काम कर रहे हैं बर्न यूनिट वार्ड पे। सर आपका खैर मकदम है सबसे पहले इस शो में। थैंक यू सो हम लोग मच। मैं अभी अपनी नाज़रीन से बता रही थी कि प्लास्टिक सर्जरी की जब हम बात करते हैं तो हम लोग बहुत कैजुअल कॉन्वर्सेशंस में प्लास्टिक सर्जरी आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करते हैं। बट जब हम लोग प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानते हैं इट्स अ वेरी वेरी डीप इन्वॉल्विंग फील्ड। तो हमारे पास श्रीनगर में जैसे कि हम बात कर रहे थे पहले कश्मीरी लोग बहुत खूबसूरत माने जाते हैं, तो ऑब्वियसली कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत लेटर स्टेजेस पे आता है। मगर नाज़रीन ये जानना चाहती है कि प्लास्टिक सर्जरी के केसेस आपके पास सबसे ज़्यादा किस तरह के आते हैं? और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली होती क्या है? क्योंकि जब हम किसी नौजवान से पूछते हैं जो मेडिसिन के बारे में नहीं जानता तो प्लास्टिक एक आजकल वो चल गया ना एंटी प्लास्टिक चीज़ वो एक मुहिम चल पड़ी है। सो अगर आप इलैबोरेट कर सकें कि प्लास्टिक सर्जरी होती क्या है? क्या इसमें किया जाता है? और इसमें क्या-क्या मतलब पेशेंट के हवाले से भी अगर वो किस मरहले से गुज़रते हैं और आप लोग किस तरह से उनको डील विद करते हैं? आपसे सुनना चाहेंगे। राइट बेनिश यू आर राइट। ये जो आपने दिया है कंसेप्ट दैट प्लास्टिक सर्जरी, जैसे प्लास्टिक, नो नोबडी लाइक्स प्लास्टिक, थिंग्स आर मेड आउट ऑफ प्लास्टिक एंड दे आर टू बी abandoned, but actually the word has come from here only. Plastikos. Plastikos is a Greek word. It means molding, I think. Molding. You give a different shape to a tissue. So plastic surgery is actually involved in that. Suppose somebody has injury to the nose and we have to make a nose. So we take a piece of the human tissue and give it shape of the nose and plant it on the where the nose should be. So that is how you know the word has come. Plastic सर आपका surgery. आपका माइक थोड़ा Like मुँह के पास like रखिए, plastic. आवाज़ थोड़ा-सा कम आ रही है। आई एम Okay, सॉरी। okay, okay, no problem. So the word itself, gives the details of what it means. Like plasticos means molding a thing in a different form. So that's plastic surgery. This concept that you are having, this concept was not in only general population. When Saura Institute was started and the Department of Plastic Surgery was asked to be started, the people who were at the helm of the affairs then said that most of the Kashmiris are beautiful
and God-given beauty is there. We don't need this department. Why should we start this department, right? But then we had to explain to them, no, there are so many patients who need our help. And in last 30, 35 years, we have proved this is one of the departments that has the maximum rush in Saura Institute, that has operated the maximum number of patients. And after my retirement, we have been डॉक्टर शबीर, आई एम सॉरी able टू to इंटरप्ट यू, say, बट आप स्क्रीन के थोड़ा बीच में आइए, आप स्क्रीन से ऑफ जा रहे हैं और आवाज माइक्रोफोन अगर सामने पकड़िए, okay, फीडबैक ऑडियंस से आ रहा है जी। okay, okay. Is that okay? आवाज बहुत Is, धीमी आ रही है, तो ऑडियंस इज सेइंग दैट आवाज बहुत धीमा आ रहा है। सो अगर आप अपना माइक्रोफोन माउथ पीस जो है थोड़ा अगर चेहरे के सामने रखें तो प्रोबेबली इट विल हेल्प। ठीक है, ठीक है. I think it's very close to my mouth. So that was the situation when we started. And we proved to the Valley people that really this department progressed by leaps and bounds. Now we were dealing with patients who had congenital malformations like clefts of the lip and clefts of the palate. Those patients used to go out of the state for surgeries. And when we started this department in the Saura Institute, we had huge rush of these patients, and we were giving them the patients results which were better than they would get in rest of India. So that is how the Department of Plastic Surgery born. Then, last 20 years we have also suffered from a turmoil, and we had war injuries. Although this is not a declared war zone, but we were virtually always dealing war injuries, and we gave results that were surprising to whole of the country. So that is राइट how the department came up. We had cancers of the head and neck region that needed reconstruction, right? So राइट सर cosmetic surgery was also there, but you can say it was at our tail end. But it was there. There are so many Kashmiris who want a nose job. There are so many Kashmiris who want something to be done to the face. And more than that, we have a lot of burn patients. You see, Kashmir is a place that's cold, where a kangri is used for heating, where electric blankets are used for heating, where we have geysers, where we have gas heaters and everything. So burns are also very common. And burns, when they become when we talk about the burns injury sir, work. Yeah. burns में किस डिग्री तक जो है रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल होती है? बिकॉज देयर आर माइनर बर्न्स which do not really involve plastic surgery I would say or reconstructive surgery, but हम लोग कितने डिग्रीज के बर्न पेशेंट्स आपके पास आते हैं और जब आप उनको ट्रीट करते हैं तो सिर्फ एक फिजिकल ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि बर्न पेशेंट्स बहुत ज्यादा इमोशनली भी चैलेंज होते हैं। तो आप किस तरह से उनको डील विद करते हैं, कितना हद तक वो स्कार्स जो है वो सुपरफिशियल स्कार्स हील अप हो सकते हैं, और ये ग्राफ्टिंग कैसे होती है? लाइक जहां तक हमने सुना है ये जिस्म के बाकी बेहतर हिस्से से उठा के यू पुट द स्किन एंड समथिंग लाइक दैट, कुछ वो इलैबोरेट कर सकते हैं अगर आप तो। G. So it depends. If they are superficial, as you explained, if they are minor burns, they don't need any treatment. A superficial burn will heal without much scarring. So you just need palliative care till the wound heals, right? But as soon as the depth of the burn increases, right, and the percentage of burn increases, patient's life gets into danger. And when patient's life gets into danger, then there are problems. Then you have to maintain the life of the patient till you can heal the burns. Suppose any patient, we call them major burns. Any patient, any adult, more than 30% of the body surface is burned, it's a very major burn, right? In a child, it will be even 10% will be major burn, right? जी So जी it depends on how much is the burn, what is the body surface area, what is the body weight, what is the age, and the depth of the burn. The treatment will depend on all those factors, right? सो द So, ग्राफ्टिंग जो होती है वो अपनी खुद की ही स्किन से होती है। आई मीन दे कैन नॉट patients, जैसे बाकी चीजों में अगर हम किसी और ऑर्गन की बात करते हैं, स्किन इज अ मेजर ऑर्गन ऑफ अ बॉडी, तो अगर हम yes, किसी और it ऑर्गन is. की बात करते हैं वहां पे डोनर्स होते हैं, तो क्या स्किन Yeah. ग्राफ्टिंग में भी कुछ ऐसा है कॉन्सेप्ट कि इसमें भी डोनर ऑर्गन मतलब कोई और अपनी स्किन दे सकता बिल्कुल, है बिल्कुल, या बिल्कुल. पेशेंट की खुद की ही स्किन से रिकवर होता है? Right. Most of the times we have to resort to patient's own skin.
But see, suppose somebody has 50% burns or 60% burns or 70% burns, then patient will not have enough skin for himself. In those cases, we take uh, skin from a different person and we mix the two. We mix, say, suppose we have a sheet of graft that is patient's own and a sheet from a donor, and then patients heal quickly. So in all burn units, there is a skin bank. Like you have blood bank, so burn units have skin banks. So that Okay. skin banks has available skin all the time for burn patients. So initially we जी use that. डॉक्टर साहब, मैं जब Till आपसे we बात have कर रही थी आपने कहा यहाँ बर्न यूनिट उतना अभी मतलब चला नहीं है बिकॉज बहुत सारे सिचुएशंस रहे, पैंडेमिक है, लॉकडाउन रहा है, तो बर्न यूनिट आपने सेटअप तो किया मगर बर्न यूनिट अभी एक्टिवेट नहीं हुआ जो हमने लास्ट कॉन्वर्सेशन किया था। तो आपने कहा कि इसका भी एक बैंक होता है, स्किन ग्राफ्ट्स का भी बैंक होता है, तो क्या कश्मीर में भी ऐसी सिचुएशंस अवेलेबल हैं, ऐसी प्रोविजंस अवेलेबल हैं? in all burns, in both SMHS hospital and new year burn unit has come in Sovra Institute. Also, there is a new burn unit. Actually, that is to be commissioned. Maybe it is commissioned very soon. And the doctors there and the faculty there, they are looking for staff and the other members who are to be recruited by the government for carrying on the work of those burn units. And burn bank, skin grafting bank is a part of that. A second bank is a part of that. They have made provision in both the places for that. सो डोनर्स इसमें वॉलंटियर होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं या कैसे चलता है ये काम बैंक का? Both the things. It can be any person. Donor can be say dead body also. And somebody wants to donate, like other organs, people donate their eyes, people donate their other organs. They can donate their skin. The relatives Okay, that also. this is Burns has so a donating skin advantage is that by the dead or live. I mean, this is a little both, scary. Like if I have to donate to somebody, that means I'm taking a part of my skin. तो वो एक yeah, थोड़ा yeah, सा yeah. मतलब खौफनाक सा आ रहा है। तो जब हम No, no, no. ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं तो आप साइन करते हैं सर्टिफिकेट की जब मैं इस दुनिया से Very फानी हो जाऊं तो तब मेरे जिस्म का हिस्सा किसी को दिया जाए। तो स्किन डोनेशन का कैसे काम किया जाता है? both the things work. You see, skin can be donated, taken from a dead body and used on any person. But a person like patient's own relations, right, or any other person, like a person donates blood, he can donate skin. And we don't take skin of the whole body. We take few sheets, and that may be enough for healing a person, right? Maybe 3 or 4 sheets from the person and patient's own body skin can be used. सो इन केस क्वेश्चन आया ऑडियंस में से, क्योंकि हम डोनेशन की बात कर रहे हैं, ये एक नया कॉन्सेप्ट जी, है, मुझे भी नहीं मालूम था, बहुत से ऑडियंस भी पहली बार सुन रहे हैं कि स्किन डोनेशन भी एक ऑर्गन डोनेशन की तरह चलता है। तो सवाल ये जी. है कि टाइम गैप क्या रहता है डोनेशन के लिए, मतलब कितनी देर तक ये स्किन रह सकती है, कोल्ड स्टोरेज में रहती है या कैसे मतलब प्रिजर्व की जाती है, फिर ये यूज हो पाती है, क्या चलता है Yes, this फॉर अ can, डेड पेशेंट इफ दे से? yes, suppose we harvest from a dead patient, it can remain no like any blood donation. It can be preserved for even 3 years, 4 years, even 10 years. That's possible. We have when ओके we have this, the place where we can preserve it. It is no problem. जी Three, जी 4 years, it can remain in a lifelized state in a proper environment, and then it can be used like a sheet anytime. Like you get a dressing from the market and use it like a sheet जी on जी the patient. Same thing can happen to a graft. A skin, surface can come and be used on a wound. तो It's possible. ये इनका दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी पेशेंट ने साइन ऑफ किया है कि मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद आप ये स्किन मेरी डोनेट कर दीजिएगा, तो कितने जी. घंटे तक ये मतलब रिपोर्ट कर देना चाहिए, 2 घंटे 3 घंटे या काफी देर के बाद भी वो उतारी जा सकती है शीट? No, no, it is best done in the first, because finally you have to dispose the body, right? जी So as soon as possible, preferably in the first 6 hours after death. जी एक और सवाल आया है कि क्या पिगमेंटेशन ट्रीट हो सकती है? साहिला जान जी ने पूछा है, इस कैन पिगमेंटेशन बी ट्रीटेड या थ्रू Pigmentation प्लास्टिक can सर्जरी? pigmentation can be treated through medicines as well as through plastic surgery, right? ओके So एंड the देयर इज अनदर dermatologist क्वेश्चन, use, इमरान ख्वाजा साहब पूछ रहे हैं
tattoo removal ho sakte hain, and is there any good place in Srinagar that it can be removed? Because that's Right. again a part of cosmetic surgery. Tattoo is best treated by a laser, right? And lasers are available privately at many places in Srinagar. There's no Okay. problem. And Ji. they can be also treated by plastic surgery if there is a localized, area to be excised, or you can do many other procedures for tattoos. जी। जब हम जम्मू कश्मीर की खसूसी तौर पे बात करते हैं, तो यहाँ पे पेलेट इंजरीज़ रही हैं, यहाँ पे बुलेट इंजरीज़ रही हैं, बर्न केसेज़, डोमेस्टिक वायलेंस केसेज़ रहे हैं, दिवाली के आस-पास पटाखों की वजह से भी बहुत बार बर्न केसेज़ बच्चों में, माइनर्स में रहे हैं। तो उनका क्या रेशो रेंज रहा है, फुटफॉल क्या रहा है और रिकवरी रेट क्या रहा है, एंड हाउ वुड यू डील विद दैट एज़ अ डॉक्टर? मतलब हम लोग तो देख के ही दहशतज़दा हो जाएँगे ऐसे हालात में इन लोगों को। तो आप लोग कैसे डील करते हैं? उनको कैसे काम डाउन करते हैं? कितना रेशो अब कम हो पा रहा है या कैसे डील विद हो पाता है? पहले क्या आपकी फैसिलिटीज़ नहीं थी और अब कितनी फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजीज़ एडवांस होने की वजह से कैसी रही हैं? अगर आप उस हवाले से हमें कुछ बता पाते। Right. See, last 20, 30 years, I must say, both in Savra Institute, I have worked very, very hard. And last 6 years, I have given in SMH hospital and again worked very hard. In the Department of Plastic Surgery in Savra Institute, this time there are about 10 faculty members who actually, I cannot say they were trained all by me. They got trained at various places, but they were working with me, right? I made the base for them and they are doing very well. It is one of the departments that is reputed all over India. So same thing is happening to SMH's hospital. We have a burn unit and the doctors there are working very hard. We have infused in them the spirit and it's getting carried on. I am hopeful that they are progressing and God will give them more and more, they will get more time to deal with these patients. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सर आप मुझसे जब आप डिस्कस कर रहे थे कश्मीर में प्लास्टिक सर्जरी के ही मतलब क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और किस तरह से होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में भी प्लास्टिक सर्जरी इन्वॉल्व होती है? आई मीन फ्रैक्चर्स और बॉडी इंजरीज हम लोग उसमें कैसे डील करते हैं? और अगर फिर से ऑडियंस का मैसेज आया कि आप स्क्रीन के सेंटर से दूर जा रहे हैं, आप प्लीज स्क्रीन के सेंटर में आइए। Right. So I don't know how it's happening. Is it okay? No. जी Okay, that's it. That's it. Okay. जी सर। You see, when you have injury to the, say, suppose to the leg or to the hand gets many times crushed in the accident, and the crushing itself causes fractures in the bones, the tendons are cut, the skin is injured. So then you have to replace it. Unless you replace it, hand will not work. It will get actually incapacitated. So same thing happens to the leg. Suppose bones get crushed, and with that the soft tissues on those bones get crushed. When that happens, you have to excise those dead soft tissues, and that makes a wound which will not heal. So plastic surgeon uses ingenious methods of putting a cover on the bone and making it heal as quickly as possible. राइट। Right? हम लोग जब आपने बताया अभी आप गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने ट्यूमर्स और कैंसर का भी कुछ मेंशन किया। तो ट्यूमर्स इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। तो जब आपके पास इंटरनल कैंसर पेशेंट्स आते हैं, एक्सटर्नल ट्यूमर्स के पेशेंट्स आते हैं, रैट्स हैं, दे हैव दोज दोज बॉयल्स और समथिंग और मे बी सम कैंसरस और नॉन कैंसर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, तो वो कैसे डील होता है? हाउ डू यू रिमूव देम एंड हाउ डू यू ट्रीट देम पोस्ट ऑपरेटिव? Right. So you see, cancers of the sun exposed areas. Our sun exposed areas are on the face and on the hands. They are very common in Kashmir, right? And both these राइट areas are dealt by plastic surgery. Suppose there is cancer on the nose or on the lip or on the lid, right? We have to excise that part, and then we bring tissues from a different surrounding area and reconstruct that area. And the patient's shape as well as without any deformity, he is repaired also. So that's an important part of plastic surgery.
जी, when you're reconstructing की बात हो रही है तो obviously आपका जैसे ऊपर वाले ने हमें बनाया है 100% वैसा नहीं हो पाता. तो there's a social stigma also involved with the changed deformity. चाहे आप कितना भी माहीन तरीके से आप रिप्लेसमेंट करेंगे स्किन की, बट कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा स्कार रह जाता है एंड देन पीपल कीप ऑन आस्किंग यू. तो पेशेंट्स को कहीं आप काउंसिल भी करते हैं? हाउ डू यू डील विद दैट? Oh, that's very important. When we get a patient who needs reconstruction, we have to counsel him several times before we undertake surgery on him or her. So it's very important. If you don't counsel and patient is not informed, sometimes they get dejected because they don't expect what the doctor did, and there is a lot of them. No differences occur between the doctor and the patient, and many of these patients, if the doctor has not counseled them well, they go to court, and they even have casuals with the doctor. So the best doctors are best psychiatrists. They are also best psychologists. They counsel their patients well, and then only it becomes possible for them. You see, suppose a burn patient, you have to know. I so many burn patients we treat on the same patient. We have to operate at least 3, 4, 5 times, 10 times. How will the patient come if he is not satisfied with you? He will not come. If he is not coming back, he will not get rid of his deformity. We have patients with the grace of God who go all over India looking for plastic surgeons. Finally, after 2 years, 3 years, they come back to us. They find that their own plastic surgeons are better than others and they deal them better. And they have that heart that is flowing towards them. They deal them like their own children and their own mothers and their own sisters, right? Like that. So the So you patients need have to a be lot of, multifunctional basically. yes, आपको you need to. फिजिशियन भी होना है, आपको सर्जन भी होना है और आपको एक काउंसलर, साइकेट्रिक काउंसलर की तरह भी डील करना, व्हिच इज अ टफ जॉब अगेन. Very right, very क्वेश्चन है right. सर व्यूअर की तरफ से, युजविंदर सिंह बाली साहब पूछ रहे हैं, हाउ मच ऑफ रोबोटिक्स इज इन्वॉल्व इन प्लास्टिक सर्जरी एंड इन कश्मीर पर्टिकुलरली? As of now, we don't have no robotics, but you see, things are progressing in every field of surgery. So robotics are doing hair transplants a lot, right? And plastic surgeons are very well involved in hair transplants, right? Hair transplant is cosmetic surgery that is taken the whole of the subcontinent by a surprise, and plastic surgery departments everywhere are getting involved in this. That's a very interesting topic that you've touched. There's a quick question from Sahila Jan. Can you suggest medicine for pigmentation? Yes, you see, pigmentation medicine can be suggested once you have a look on what is the pigment because of. If it's a congenital defect that is giving the pigment, the treatment is not medicine. If it's a pigment that's coming because of an inflammation, maybe the medicines help. So patients always need to have a consultation with the doctor, and then it is possible. Yes. So I was talking about, आपने कहा एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात की आपने कि हेयर ग्राफ्टिंग, रोबोटिक्स वगैरह. So that's I think cosmetic part of the plastic surgery. So जो Yes. आजकल when I talk about commercial, जो मैंने शुरू में कहा कि हमारी plastic surgery field extensive है. When we talk about reconstructive, that's more of the emotional side of the doctor. When we Right. talk about the cosmetic, that's the commercial side of the patient. लोग आजकल जो Right. आजकल के It नौजवान is हैं both. वो It अपनी is both. शक्लों It से is कुछ खूबसूरत, मतलब बहुत अल्लाह ने बहुत I, खूबसूरत हर एक इंसान को actually बनाया है, those मगर patients are emotionally also disturbed a lot. यस दे आर इमोशनली Those चैलेंज्ड patients, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई आपको कुछ बोल देता है, आपका नाक टेढ़ा है, आपकी आंख यहाँ से ऐसी चली गई है, यू हैव अ क्लेफ्ट, very और प्रोबेबली yes. देयर आर डिफरेंट थिंग्स. आपके पास कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए कैसे पेशेंट्स आते हैं कश्मीर में Sub, स्पेसिफिकली? इफ आई टॉक अबाउट, जैसे आप ही ने कहा कि कश्मीर के लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, तो जम्मू कश्मीर right. में किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? See, nose is generally in Kashmiri's nose is a big nose, so they want to reduce their nose. So nose job is very common, right? So there are not only plastic surgeons involved in nose job here, even the ENT surgeons and all others are putting their hand on that, right? So similarly, you have clefts. A lot of clefts are there in Kashmir, and we have to repair them, and they need several operations sometimes. And our results, mashallah, with the grace of God, are very, very good. We are happy. Our patients are happy. Right, sir. So again, very nose job hai. Somebody is asking from the viewers, how safe is PRP?
When we Yes, talk about PRP is hair very grafts, safe. I think there's PRP something Yes, involved, hair grafting and PRP. right. Is it Right. safe? It is very safe and it's very And how effective. successful is that? It is very successful, and सो we have सर ये proved जो हेयर results. ग्राफ्टिंग होती है, पीआरपी होता है, ये कॉस्मेटोलॉजी है और इज दिस प्लास्टिक सर्जरी के ही एक ब्रांच? You see, आई वुड वांट here टू नो. is here when we take it's a hair transplant. Basically, it's grafting. Like we do skin grafting, we do hair grafting. Now the harvest. If you harvest the skin, you harvest with a blade. Now you can harvest the hair follicles in a different way, right? There are so many methods of harvesting the hair. Then planting. You see, if you plant the skin and no, it survives. Plastic surgeon knows it best, and he would also know it best how to get a hair follicle and put it somewhere else, right? So there सी is no problem. हार्वेस्टिंग हैज चेंज द मीनिंग ऑल टुगेदर. पहले हमको सिर्फ धान, चावल, गेहूं इन सब की हार्वेस्टिंग पता थी. आजकल बालों की भी हार्वेस्टिंग होती है. Very एंड right, very ब्लड right. बैंक के बाद हमें आज पता चल रहा है कि स्किन बैंक्स भी होते हैं स्किन ग्राफ्टिंग के लिए. सो दैट्स Very दैट्स दैट्स व्हाट वी नीड टू डू. और सर हमारे इस प्रोग्राम का भी यही मुद्दा रहता है कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स हमारे साथ रूबरू होते हैं स्क्रीन पे, हमारे व्यूअर्स के कुछ सवाल रहते हैं, वो उनके जवाब दिए जाएं और आवाम को और ज्यादा बताया जा सके सही तरह से कि एक पर्टिकुलर साइंस की, मतलब फील्ड की बात जब हम करते हैं मेडिसिन की, तो वो जी. क्या एडवांसमेंट है, किस हिसाब से चल रही है, उसमें क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं. सो आपने हमें बताया कि सौरा में और जीएमसी में अवेलेबल है. आप आजकल हाल ही में मेरे ख्याल से आप मॉडर्न हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हैं, तो क्या उनकी भी टेक्नोलॉजी अप टू डेट है, या जैसे Right. आपने ही बताया कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स पहले बाहर जाते हैं फिर कुछ साल गुजार के वापस आते हैं, बिकॉज इट्स नॉट वन डे जॉब. Yeah. प्लास्टिक सर्जरी रिकवरी हो या रिकंस्ट्रक्टिव हो या कॉस्मेटिक हो, ये एक दिन या एक सिटिंग में नहीं होता. तो हमारे Very. जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, हम किस लेवल पे हैं ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 इफ आई वुड से, हम किस लेवल तक पहुंच चुके हैं, और अगर हमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है तो क्या होनी चाहिए? सिंस आप ही ने ये इंट्रोड्यूस किया था 20 years ago and now, what is the difference? Right, right. We can actually, in private sector we don't have a burn unit, right? No hospital, no nursing home as a of now a burn unit. So most of the times a burn patient is, you will not see him admitted in a private hospital, because burn patient will need lot of care, which is critical care, and no, it cannot be given in a nursing home because critical units are not in the nursing homes. So that is an area that has to be developed by private entrepreneurs as well, right? Similarly, जी. cosmetic surgery units, they have to be wholesome. Like unit should have hair transplant area also, a cosmetic surgery area also, a laser area also. So where all the things are together, then it's possible to run several units. Very nice. इट वॉज रियली अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड सर. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. बहुत ही जो चीजें मुझे भी नहीं मालूम थी, और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स में भी बहुत से लोगों के सवाल थे जो आपने आंसर किए, बहुत पोलाइटली बहुत स्वीटली किए. आप ही के लिए एक और व्यूअर ने पूछा है कि सर आप मॉडर्न हॉस्पिटल में किस टाइम बैठते हैं, और हमारे एक क्रिटिकल सवाल आया है, डू यू थिंक आवर हेल्थ केयर सिस्टम ओवरऑल नीड्स रिफर्बिशमेंट? ये युजविंदर सिंह बाली साहब ने पूछा है. और जो पहला सवाल था वो साहिला जान जी पूछना चाहती हैं, आपके क्लिनिक के टाइमिंग्स क्या हैं? I see patients in modern hospital at 4:30 after my prayers are surprise, and in the morning I have a private clinic at Hyderpura IT shop, where I have laser, where there is a possible to do hair transplants also, right? जी, So शुक्रिया. that is about it. About the what you can do for the patients. You see, to be frank, I am at the fag end of my professional career. We should make plastic surgery available to the ordinary, poor patient very easily. And you see, I have there are so many patients I could save in the SMH hospital, burn patients with Prime Minister's card. Those सर who आप had स्क्रीन से बाहर हो miscarriage. गए. Right, Prime Minister's card. There is one, no, Prime Minister's health card. No, with हम्म. that, no, that gives an insurance about around up to 5 lakh.
So most of those patients could purchase parental nutrition for their care, as well as drugs for their care, and I could save many patients. And if that facility is given to all who get burns, that would be wonderful. That I would say the government should do at the first thing in a burn unit in a hospital, because it should be also made available privately, so that even see burn load is so much that maybe sovereign institute and SMH hospital is not enough for us. So private sector, if they have to take, they should be given those facilities also, that call they should be able to use. जो आप That's it. प्राइम मिनिस्टर्स कार्ड की बात कर रहे हैं, आई थिंक आप यू आर रेफरिंग टू द गोल्डन कार्ड दैट इज बीइंग Golden card. स्टार्टेड. Yes, जी, yes, जी. yes, So yes, अब तो yes. प्राइवेट हॉस्पिटल्स I, भी एक्सेप्ट कर रहे हैं गोल्डन कार्ड अंडर द but न्यू but गाइडलाइंस. but probably plastic surgery जो burns है का केयर उसमें नहीं है. So ओके. that has to be done. That has to be done. जी. It has to be taken. uh, Critical care units are not in private sector. जी. So critical care units will actually take care of our trauma patients, which actually get spoiled sometimes, and burn patients also can be taken if critical care areas are started in private sector. जी. व्यूअर्स में से एक और सवाल आया है, जब कश्मीर में स्पेसिफिकली कुछ गुज़िश्ता सालों में बाइट केसेस बहुत रहे हैं, बच्चों के चेहरे Very, कुत्तों ने खा लिए very या right, पहाड़ी very, एरियाज में बेयर अटैक्स रहे, very, तो very उन right. क्रिटिकल केसेस के रिकवरी रेट्स और डील कैसे कर पाए आप लोग? दैट्स बीन So समथिंग वेरी we have स्कैरी. you see children when they get hurt like this, and we have to reconstruct them at sometimes in several stages. It leaves them lifelong trauma, and it's a very much preventable disease. And I hope good sense prevails on whole of the population to prevent the injuries in one stage, and to get the best treatment in the hospital, as in private as well as in government sector, because सर, these are इन इन lifelong केसेस में scars. जब फेशियल रिकंस्ट्रक्शन की बात होती है, तो कितना परसेंट आप लोग रिकवर कर पाते हैं? फेस I मतलब would say वापस बिल्कुल most वैसा of हो the पाता है time, या? most of the times we are able to do 99, I would say, around that. So we it depends on how severe is the injury. Most of the times our results are very good. At least I can tell you, there are many patients who have told me, when they went to Delhi, the people were surprised that they got such a plastic surgery done in hospital in Srinagar, right? So most of our doctors here are very good. माशाल्लाह. Since you've been a very jovial doctor and everybody really praises you, आपके 30 plus years of your career span, I would ask, कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो जो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट किया हो, आपने कोई केस देखा हो जो आपको मतलब याद रहा हो, और वो शायद लेसन रहे अगर आपके कोई स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस अगर आप हमसे कोई शेयर कर सकते हैं. There's so many of them. There are so many of them. There was one patient, no, initially when I began in Sovereign Institute, whose nose was burned totally, and whose upper lip was also not there. He had injury, electric burn, right? And then I reconstructed his upper lip and lower part of the nose with a flap from the arm. No, I got bought tissue from the arm. And then I reconstructed a mouth stitch on that. So a whole of the upper lip as well as the part of the nose and mouth stitch on that was reconstructed. When that patient was shown in a conference in Amritsar, all the plastic surgeons who were attending and seeing that got up to appreciate and cheer that reconstruction. That was a happy moment for me. माशाल्लाह. So there are so many patients. बिफोर या हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता जा रहा है, मगर मैं आपसे आखिरी एक सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके स्टूडेंट्स के तरफ से पूछना चाहूंगी, क्योंकि बहुत से एस्पायरिंग डॉक्टर्स हैं जो प्लास्टिक सर्जरी फील्ड, कॉस्मेटिक सर्जरी या जैसे आपने इनका फील्ड का बताया, प्लास्टिक सर्जरी फील्ड ही है. आई कैन नॉट यूज द प्रॉपर मेडिकल टर्म फॉर दैट, तो एक्सक्यूज मी फॉर दैट. बट जब वो लोग इस फील्ड की तरफ आना चाहते हैं, हर एक फील्ड का जब भी आप ज्वाइन करते हैं एक डिसेंसिटाइज किया जाता है. सो बीइंग अ पायनियर इन योर फील्ड,
what message will you give to the audience, to the viewers here, if they are listening to you, your students? How desensitized should they be before dealing a patient, and how emotionally strong they need to be before dealing a patient? Desensitize का मतलब ये नहीं कि emotionless हैं और आपको फर्क नहीं पड़ रहा, but you have to be somebody who can help them. So आप emotion होकर रो नहीं सकते, आप कुछ गलत नहीं कर सकते, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने youngsters को? See, when you have a patient with a deformity, he has lost hope. So when he comes to you, give him the hope. So you try to improve his trust on the God, and try to tell him that I am there to help you, and I'll restore you to normal with the grace of God. And it often happens. It often happens. If you use God's name everywhere, it often does. You often do. Absolutely. Absolutely. आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये आपके मैसेज और आपके सारे जो आपने हमें बताए कि बर्न, कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशंस, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, और जिस तरह से भी आप लोग डील करते रहे हैं, उम्मीद है कि जो लोग इंस्पायर होना चाहते हैं, जो इस फील्ड में जुड़ना चाहते हैं, उनको भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला होगा। और हमारी ऑडियंस का एक क्विक क्वेश्चन है, शायद से आपको थैंक यू कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, व्यूअर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो विद अस सर। इंशाल्लाह आपको दोबारा से हम स्क्रीन पे बुलाएंगे, दावत देंगे और कभी और तफसील से बात करेंगे। आज का हमारा वक्त इतना ही है। ऑडियंस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने व्यूअर्स आई वुड से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने सवाल पूछे, और उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब हम पूरी तरह से दे सके। आपसे दोबारा मुलाकात होगी और इसी प्लेटफॉर्म पे नीचे स्क्रॉल चल रहा है। प्लीज हमारे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट और फेसबुक के हमारे सिस्टर कंसर्न है कश्मीर क्लारियन, उनको भी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। और आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपको? मेरे से कोई गलती हुई हो, कुछ बोलने में या पूछने में कुछ छूट गया हो, तो प्लीज उसके बारे में भी आप फीडबैक दीजिएगा। देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, इफ नोबडी इज परफेक्ट, एंड आई टेक दैट वेरी कॉन्फिडेंटली कि देयर इज नोबडी हु इज परफेक्ट। सीखने का मौका देते हैं और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इल्तमास से दुआ, अल्लाह हाफिज।